ओके जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ स्टडी ऑफ एएस। सो इस स्टडी का नाम है गुड समैरिटन एंड अंडरग्राउंड स्टडी। इसको अंडरग्राउंड स्टडी या सबवे स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टडी के अंदर बेसिकली हम लोग क्या देख रहे होंगे, वी विल बी लुकिंग एट सर्टेन थिंग्स दैट द रिसर्चर ओवर हियर वांटेड टू अंडरस्टैंड। और उसको समझने के लिए कि रिसर्च करी क्यों गई थी, हम लोग बात करेंगे अबाउट एन इवेंट दैट टुक प्लेस, जिसके रीजन के अंदर या जिसको एनालाइज करते हुए हमारे जो रिसर्चर हैं पिलियावन, उन्होंने ये रिसर्च करने का फैसला किया। What are those reasons? Uh, let's look at the background of this research. First of all, ये research करी क्यों गई, इस रिसर्च में क्या चीज है जो कि ये लोग फाइंड आउट करना चाहते थे। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे हम लोगों ने जो ये किटी जेनोविस का जो एक नाम लिखा हुआ है, दिस किटी जेनोविस इज अ फीमेल हु वाज मर्डर्ड, हु वाज ब्रूटली मर्डर्ड। ठीक है, इसका ब्रूटल मर्डर जो है उसने रेज किया कंसर्न्स टू सोशल साइकोलॉजिस्ट, एंड हेंस ये स्टडी हम लोगों को जो है वो मिलती है सोशल साइकोलॉजी, या एक हम लोग कह लें कि इस स्टडी को सोशल साइकोलॉजिस्ट ने कंडक्ट किया टू फाइंड आउट कि व्हाई इज इट दैट व्हेन समवन इज इन नीड ऑफ हेल्प पीपल डू नॉट हेल्प। ऐसे क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से लोग या पीपल डू नॉट हेल्प अनदर पर्सन। एंड दिस रिसर्चर Piliavin, इसने पूरी एक स्टडी करी टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना दैट लीड्स अ पर्सन टू वांट टू हेल्प एंड लीड्स अ पर्सन नॉट वांटिंग टू हेल्प। ठीक है, so let's look at the initial background of this study कि क्या चीज ने हमारे रिसर्चर को पुश किया टू एक्चुअली कंडक्ट दिस स्टडी। So Piliavin, as you all know, Piliavin is the researcher's name. Piliavin et al. Note in their study that social psychologists became practically interested in the behavior of bystanders following the case of the brutal murder case of Kitty Genovese. As I said, कि social psychologists के जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग केस था ये उन लोगों के लिए कि यार why, to understand the psychology of humans. Why does a person not want to help, or why does a person see another human being, another person, another anyone in need of help, and why does a person does not want to help, or does not, or decides not to help. So this study this case of Kitty Genovese was a murder case where it started from a robbery, और ये robbery होते होते जो है वो एक murder में convert हो गया. This lady was brutally stabbed around 30 and plus times, and died a very brutal and a very painful death. ठीक है, उसके सराउंडिंग में जहां पे ये इंसिडेंट हुआ, there were a lot of buildings, but nobody from the building came for help. Nobody called the police. Nobody called the ambulance. So it was seen कि ऐसा अब ये जब इतना बड़ा केस हो जाता है, ऑब्वियसली बात है ये पाकिस्तान में हो, अल्लाह ना करे, we see these kind of cases every day, almost every day in Pakistan. But when we see this kind of case happening in the US or the UK or any foreign country that is very strict on crimes, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी डील होती है। और ये जो इतनी बड़ी डील होना, ये सबसे बड़ा रीजन था कि यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का अटेंशन ग्रैब हुआ, and psychologists wanted to identify what was the reason that people did not help, or people preferred not to call the police, or did not preferred not to get involved. Sorry, आगे चलते हैं। ये केस हुआ था हमारा न्यूयॉर्क के अंदर इन 1964, so it's a very old case.
The murder attracted interest from psychologists because not one person out of the 40 people who witnessed the attack, lasting over half an hour, tried to help or contact the police. So let's start making a few points. ये पॉइंट्स हम लोगों को हेल्प करेंगे कि हम किस तरीके से इसको आगे देखते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है केस ऑफ किटी जेनोवस. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है दैट दिस अटैक was going on till 30 minutes. ठीक है. तो ये 30 मिनट्स तक ये अटैक चलता रहा. इसके अलावा आई विटनेसेस, there were 40 eyewitnesses and यहाँ पे लिख देते हैं none of them helped or even called the police. ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग देखते हैं कि इतना लॉन्ग लास्टिंग इवेंट था, 30 मिनट्स तक ये चलता रहा. There were 40 people who could see or were listening to the attack taking place, but none of them helped this person. And यहीं पे हम कहते हैं इसका मतलब होता है bystander effect. ठीक है. So over here the researcher wants to identify the bystander effect. What is the bystander effect? When no one helps or does anything to help in an event taking place. तो अगर आप कोई एक इवेंट होते हुए देख रहे हैं but you're not doing anything about it, then you are a bystander. So in plain simple words, अगर समझने के लिए मैं आपको एक बात समझाना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि a bystander effect is when you look at some event taking place or some event happening, but you do not do anything to affect that event. You're just a person looking at it or looking at the event, and that is it. You're not doing anything to affect it, stop it, promote it, or to do anything with that event. ठीक है. तो ये होता है bystander effect. Now जहां पे वो यही देखना चाह रहे हैं रिसर्चर्स हमारे कि bystander effect जो है वो क्यों होता है लोगों के अंदर, राइट? क्यों अगर कोई किसी को नीड में देख रहा है, हेल्प की नीड में देख रहा है, बट नोबडी इज हेल्पिंग, व्हाई इज दैट? लेट्स मूव फॉरवर्ड. Many laboratory studies were carried out by the social psychologists to test bystander apathy. That is the phenomena of when observers of an emergency situation do not intervene. Exactly what we just learned. जब एक emergency situation के अंदर nobody wants to intervene, that is bystander apathy. Okay. अच्छा जी. So there were multiple studies that took place क्योंकि of course when something is of very interest to psychologists,
तो सारे साइकोलॉजिस्ट उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई तरह की जो है वो रिसर्च, so that they can come up with some answers to understand the situation and then better explain the situation to people, why people act in a certain way when they do act in a certain way, क्यों एक इंसान किसी तरीके से एक्ट आउट करता है जब वो कहीं किसी तरह से एक्ट आउट करता है। तो यहाँ पे there were multiple studies that were conducted. All of those studies were lab studies, ये याद रखिएगा, सारी लैब स्टडीज थी। अब ये लैब स्टडीज में क्या हो रहा है, इन लैब स्टडीज में ये लोग, ऑब्वियसली बात है, वी अंडरस्टूड व्हाट लैब एक्सपेरिमेंट्स आर, एंड लैब एक्सपेरिमेंट्स होती हैं जहां पे हमारे पास एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, राइट। फिर हमारे पास थोड़ा ड्रॉबैक होता है जहां पे हम लोग कहते हैं कि लैब एक्सपेरिमेंट जो है वो इकोलॉजिकली इतना वैलिड नहीं होती, विच मीन्स कि हम लोगों की रिसर्च जो हम लैब में कर रहे होते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट जो हम लैब में कर रहे होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट के अंदर उतना रियल इफेक्ट नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जगह पे खड़े हुए, आपके सामने कोई रॉब हो रहा है, if someone's getting mugged in front of you, you might not do anything, whereas if I test that in a lab and you're in a lab, present in a lab, and someone is getting mugged in front of you, you might want to help because you know for a fact कि इस lab के अंदर control environment है, वो मुझे मार नहीं देगा। सो आपके पास एक गारंटी है कि कोई चीज नेगेटिव आपके साथ नहीं होगी, whereas in the real environment there is a guarantee that some anything can happen, right? तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम थी, एंड इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हमारे रिसर्चर ने आइडेंटिफाई कर लिया था। हमारे रिसर्चर को पता था कि यहाँ पे उसने एक लैब एक्सपेरिमेंट नहीं करनी। व्हाई? बिकॉज इन अ लैब एक्सपेरिमेंट the bystander effect and the bystander apathy was quite evident, और वो दिख रही, people were not helping other people, and you could see that because maybe they did not feel like they want to help people because एक environment के अंदर है, उन्होंने कहा कि ठीक है, you know, हम कहीं पे आए हुए हैं, it is not my responsibility to help, but whereas looking at the case of Kitty Genovese, वो केस हुआ था रियल फील्ड के अंदर, एक रियल वर्ल्ड के अंदर, जहां पे if a person would have intervened, they must or could have gotten hurt। तो इस रिसर्चर ने, पिलियावन ने कहा कि आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस रिसर्च इन ए field, all right, let's move forward and then we'll come on to the research as well। This is a phenomena, अच्छा हम लोग ने पढ़ लिया। Importantly, social psychologists look at the cause of bystander behavior, not in the type of people who do or do not help, but in this situation factors which influence the behavior। तो यहाँ पे हमारे रिसर्चर्स, ये जो लैब एक्सपेरिमेंट जिन्होंने करी थी, पुरानी बहुत सारी स्टडीज थी जिनका डेटा मौजूद था, उन स्टडीज को जब इवेल्युएट किया पिलियाविन ने, तो उसने कहा कि यू नो व्हाट, there are so many studies that have been done in this specific domain where the researcher wants to find out that what causes the bystander effect, right? But वो सारी एक controlled environment में हुई थी, and over here importantly ये जितनी भी रिसर्चेस थी, इन रिसर्चेस के अंदर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही थी कि कॉज क्या है बाय स्टैंडर्ड बिहेवियर का, एंड अलोंग विद दैट इन्होंने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं की कि किस तरह का, या इन प्लेन सिंपल वर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ एथनिसिटी डज अ पर्सन हैव, और व्हाट काइंड ऑफ पीपल विल हेल्प द अदर पर्सन and what kind of people may not help the other person। ठीक है, so यहां पे हमारे पास दो चीजें और आइडेंटिफाई हो जाती हैं। Piliavin over here
ठीक है जी। तो हमारे पास सिचुएशनल फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई कर रहा है वो, एंड अलोंग विद दैट वो टाइप ऑफ पीपल भी आइडेंटिफाई कर रहा है, जो लोग हेल्प करेंगे एंड जो लोग हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर वन, पिलियावन डिड दिस रिसर्च फॉर टू रीजंस। नंबर वन, हमारे पास जो प्रीवियस डेटा और रिसर्चेस थी वो सारी रिसर्चेस एक ही तरह से की गई थी, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, लैब सेटिंग के अंदर। ही डिड नॉट वांट टू डू दैट, ही wanted things to come onto the field and field experiment करना चाहता था। नंबर टू, हमारे पास पिलियावन ये आइडेंटिफाई करना चाहता था कि कौन से टाइप ऑफ लोग होंगे जो के हेल्प करना पसंद करेंगे और जो कि हेल्प करना पसंद नहीं करेंगे। एंड अलोंग विद दैट यू आल्सो वांटेड टू आइडेंटिफाई द सिचुएशनल फैक्टर्स, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हेल्पिंग बिहेवियर को एड करते हैं, हेल्प करते हैं टू मेक अ पर्सन डिसाइड वेदर ही वांट्स टू हेल्प और नॉट, एंड कौन से एलिमेंट्स हैं या सिचुएशन के फैक्टर्स हैं या सिचुएशंस हैं जिसके बेसिस के ऊपर he wanted to highlight the situational factors that may influence a person not to help. All right, let's move further now. I'm going to erase this so that we have more space to write. All right, two important concepts investigated by the social psychologists were diffusion of responsibility and pluralistic ignorance. So again, हमारे पास दो और terminologies आ गई हैं that we want to know. सबसे पहले अगर आप लोगों को पता हो, हम लोगों ने एक terminology जिसको हम लोगों ने देखना है यहाँ पे, वो है bystander effect, then diffusion of responsibility, and then प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। सो सबसे पहले हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट जो है या बाय स्टैंडर्ड एपैथी हम लोग कर चुके हैं। सो वी आर नाउ लुकिंग एट डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। What is diffusion of responsibility? It is the idea that people are less likely to offer help to someone if there are a lot of people present in a situation, because everyone perceives that it is not my job to help, it is the next person's job to help. Or everyone perceives that, people standing in front can help, I don't have to rush all the way from back and come and help. ठीक है, सो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है कि द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव इन योर सेल्फ, it diffuses if you have a lot of people standing at an event. So for example, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, और ये एग्जांपल मेरा बड़ा फेवरेट एग्जांपल है। इस एग्जांपल को मैं इस तरह देता हूं कि हम लोगों ने एक बाइक वाले को देखा है हमेशा, राइट? और बाइक वाला जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसका एक्सीडेंट होता है तो हजारों बाइक वाले आके खड़े हो जाते हैं। अगर आपने कभी उस सिचुएशन में जाकर देखा हो और खुद भी खड़े हो गए हो, टू अंडरस्टैंड, एंड यू शुड डू दैट। अगर कभी आपको दिखे कहीं रोड पे एक्सीडेंट हुआ हुआ, तो यू शुड गो एंड स्टैंड जस्ट टू फिगर आउट दिस आइडिया, द डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। If there are 100 people standing or 1,000 people standing over there, there are only 2 or 3 people who are actually doing something for that person जिसका एक्सीडेंट हुआ है, which means कि 100 लोगों में से only 2% people or 1% people are actually doing something about the event, which means कि वो लोग bystanders नहीं है, and hence
जब एक या दो इंसान 100 लोगों में से कोई काम कर रहा है, दैट मीन्स के बाकी रिमेनिंग 98 99 लोग are actually bystanders. They're just standing there looking at what's happening and not doing anything else to aid, help, change the situation. So bystanders वो सारे हो गए. अब ये bystandard के अंदर क्यों ऐसा होता है? ये होता है diffusion of responsibility की वजह से. Diffusion of responsibility कहती है when there are a lot of people present, then the sense of responsibility is going to be diffused between all of these people. And because of that, there will be less people or no person will help the person in need. Kitty Genovis के केस के ऊपर आ जाते हैं. 40 people who looked at or were the witnesses of our अटैक ऑन किटी, ठीक है, लेकिन इस अटैक को रिपोर्ट कितने लोगों ने किया? एक ने भी नहीं किया. क्यों नहीं किया? बिकॉज हर कोई ये सोच रहा था कि यार कोई बात नहीं, दूसरा जो करीब है ना, या जो करीब की बिल्डिंग के है, उससे जो कोई कोई बंदे ने कर दिया होगा या कर देगा. The sense that another person is going to help and it is not my responsibility is known as diffusion of responsibility. Let's move forward to pluralistic ignorance. Pluralistic ignorance is the tendency for people in a group to mislead each other about an emergency situation. So when there is an accident, एक accident हुआ एक बाइक वाले का और एक कार वाले का, ठीक है, बाइक और गाड़ी वाले का एक्सीडेंट हो गया. अब इतने सारे जो लोग यहाँ पे जमा हो गए, ये लोग अब एक दूसरे को मिसलीड कर देंगे कि ये एक्चुअली कोई इमरजेंसी सिचुएशन है. व्हाई? हमने चाइनीज विस्पर खेला है. चाइनीज विस्पर के अंदर क्या होता है कि बात से बात बनती है और जब फाइनल बंदे के पास पहुंचती है तो कुछ और ही बन चुकी होती है. करेक्ट? तो इसी तरीके से when there are so many people involved or standing near an emergency situation, they tend to mislead each other about the actual situation and the intensity of the situation. और जब ये intensity और actuality of the situation mislead हो जाती है तो pluralistic ignorance आ जाती है, जिसका मतलब होता है that a mob तो नहीं कहेंगे इसको, sorry, group of people get misled that it is a emergency situation and entirely ignore the situation. As a group, pluralistic ignorance meaning कि हम इग्नोर कर रहे हैं किसी सिचुएशन को because there is so many people standing over there and there is a misled idea about the situation and its intensity and its emergency, whether it is an emergency situation or not, and hence because of that everyone standing over there collectively ignores the situation. ठीक है? Let's move further into it and हमारे पास इसके बाद आ जाता है the early laboratory experiments. वो क्या थी उसको जरा से समझ लें क्योंकि इतनी important नहीं है, but you should know about them. The early laboratory experiments into bystander apathy consisted of candid camera trigger happy style scenarios where people were placed in situations with a smoke filled room and then उन्होंने देखा कि कौन किसकी हेल्प करता है, क्या लोग हेल्प करते हैं आग बुझाने में, नहीं बुझाने में, वगैरह वगैरह, बट nobody really help, हर कोई अपनी जान बचा के भागता है. अच्छा, there was another thing that was different in the previous studies. के अंदर उन्होंने एक
पार्टिसिपेंट पर एट अ टाइम रिसर्च करा एंड उससे उनको ये अंदाजा हुआ कि यू नो व्हाट, पीपल डू नॉट हेल्प, whereas in the research that we are going to study जो पिलियावन ने करी है, इसके अंदर इसने एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर पूरा स्टडी किया एंड अलोंग विद दैट इसने ये भी आइडेंटिफाई किया कि किस तरह के लोग कौन से टाइप ऑफ पीपल आर मोर विलिंग टू हेल्प एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर नॉट विलिंग टू हेल्प. नंबर टू, व्हाट आर द सिचुएशनल फैक्टर्स, मतलब सिचुएशन कैसी डेवलप हो जाएगी कि जिसके बेसिस के ऊपर हमारा जो पार्टिसिपेंट है या हमारा जो पर्सन है who is standing there is going to help or not. All right, let's move further. These experiments usually consisted of one participant. All right, कि इनके पास यहाँ पे सिर्फ एक पार्टिसिपेंट होता था और इस एक पार्टिसिपेंट के बाद हमारे पास यहाँ पे प्लांटेड लोग होते थे जो कि हमारे खुद के लोग होते थे और वो लोगों ने ऑब्वियसली उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती थी कि स्क्रिप्ट के ऊपर आपने जैसा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वैसा ही करना है. सो हेंस इट वाज अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. ओनली द पर्सन हु वाज अ पार्टिसिपेंट वाज अ पर्सन जिसको स्क्रिप्ट नहीं दी जाती थी. तो जब बाकियों को वो देखेगा कि सब भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, तो he himself is also going to do what the majority of the people are doing. And because of which हमारे पास ये जो हमारा पिलियावन है, उन्होंने कहा कि इस रिसर्च में जो बाकी रिसर्चेस प्रीवियस रिसर्चेस हुई भी हैं, उन रिसर्चेस में there is a flaw. They need to have more participants in order to identify what is going to happen in a situation, in a true situation. आगे चलते हैं. कॉन्फेडरेट समझ आ गया आपको? कॉन्फेडरेट्स क्या होते हैं? कॉन्फेडरेट्स आर पीपल हु आर पेड एक्टर्स टू टेक पार्ट इन आवर रिसर्च. These are people planted by the researcher himself. Let's move forward. One of the findings of such laboratory experiments was that people did demonstrate diffusion of responsibility. तो हमारी प्रीवियस डेटा के अंदर ये बात क्लियर हो रही है कि हमारे जितने लोग हैं वो सारे लोग आर या जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑल ऑफ देम शोड डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम लोगों ने अभी पढ़ा डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जहां पे एवरीवन थिंक्स दैट इट इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट सिचुएशन, वो लोगों में पास ऑन हो जाती है व्हेन देयर इज अ big gathering or a bigger group. That is why they were less likely to help as the number of bystanders increased. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जैसे ही bystanders के numbers बढ़ जाते हैं, when bystanders के numbers बढ़ जाते हैं, diffusion of responsibility increase हो जाती है, हेल्पिंग बिहेवियर कम हो जाता है. ठीक है, ये बात समझे कि जब हमारे पास बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट या बाय स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सेंस दैट इट इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प, ये बढ़ जाता है. एंड हेल्पिंग बिहेवियर ऑन द अदर हैंड डिक्रीज हो जाएगा, एंड विच इज व्हाई वी डोंट सी हेल्पिंग बिहेवियर इन लार्जर ग्रुप्स. I hope it is clear. आगे चलते हैं. However, Piliavin et al. Recognized that these laboratory experiments lack ecological validity. What is ecological validity? Ecological validity होती है how true is the situation to real लाइफ. असल जिंदगी से, असल दुनिया से ये सिचुएशन कितना क्लोज है. ठीक है, क्या मैं एक सिचुएशन को देखकर कह सकता हूं कि दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज इन द रियल वर्ल्ड एज वेल, या अगर मैं किसी सिचुएशन को देखता हूं और मैं हंसता हूं, कहता हूं यू नो व्हाट, ये फेक है. राइट. सो व्हेन वी से कि हमारी जितनी भी लैब एक्सपेरिमेंट्स थी, वो सब लैब एक्सपेरिमेंट्स में जो हेल्पिंग बिहेवियर टेस्ट करना चाह रहे थे वो बहुत ही फेक था. इट वाज नॉट सो क्लोज टू द रियल वर्ल्ड.
एंड हेंस विच इज वाई हमारे रिसर्चर कहते हैं मिस्टर पिलियावन कि ये इसी वजह से हमारा जो रिजल्ट आया वो ये आया है कि लोगों ने हेल्प नहीं किया बिकॉज दे न्यू कि उनके हेल्प करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज इट इज एन एक्ट दे समवेयर न्यू दिस. Now let's talk about the aim of our research. सबसे पहले हमारी इस रिसर्च का एम क्या है? Aim, as we all know, is what we want to investigate, what we want to find out in this research. हम इस रिसर्च में ये रिसर्चर ने इतना इन्वेस्ट किया टाइम तो क्यों किया है? What does this researcher want to investigate? ये क्या आइडेंटिफाई करना चाहता है? ये क्या रिजल्ट निकालना चाहता है? ये क्या समझना चाहता है? तो ये हमारा एम होता है. The aim of the study was to investigate factors affecting helping behavior. That is, हमने already पहले identify कर लिया था कि हमारा जो researcher है Mr. Piliavin, he wants to find out कि क्या factors हैं जो कि helping behavior को affect करते हैं. ठीक है? What are the factors that help that affect the helping behavior? The factors they were interested in were 5. Number 1, the type of victim, matlab the one being helped. जिसको हम हेल्प कर रहे हैं वो कैसा इंसान है? What kind of a person is that? Who we are expected to or we want to help. In this situation, इन्होंने 2 तरह के लोग निकाले जिनको हेल्प चाहिए थी. अब वो कैसे चाहिए थी वो हम आगे पढ़ेंगे. We will understand the whole procedure. But just understand they identified 2 types of victims. हम victim किसको कह रहे हैं? ये अगर आप देखें हम victim किसको कह रहे हैं? Victim is the person who is going to receive help. जिसको help receive होगी, जिसको हमारे participants are going to help, they are known as victims. इन्होंने 2 तरह के victims आइडेंटिफाई करे. एक उन्होंने आइडेंटिफाई किया drunk victim और एक उन्होंने ill victim आइडेंटिफाई किया. Drunk victim we all know, जिसने शराब पिया हुआ है या who is drunk and is not walking straight, is smelling of alcohol. Ill situation में they made the person carry a cane, लकड़ी, stick. Alright? ये आपकी पहली चीज आ गई कि किस तरह का विक्टिम है जिसको हम हेल्प करना चाहेंगे. क्या हम ड्रंक को हेल्प करना चाहेंगे या हम बीमार इंसान को हेल्प करना चाहेंगे. नंबर 2, द रेस ऑफ द विक्टिम, जिसे हम हेल्प करने वाले हैं, इज दिस पर्सन ब्लैक और व्हाइट. देन नंबर 3, द स्पीड ऑफ हेल्पिंग, हाउ फास्ट are we going to help the person who needs help. जिसे हम हेल्प करने वाले हैं उसको हमें कितनी जल्दी हेल्प करना है. 5th, the race of the helper, जो हेल्प कर रहा है, what is that person's race? Is that person black or is that person white? All right. So these were the 5 points, या 5 factors that they wanted to assess कि क्या अगर एक drunk होगा इंसान
और वो गिर जाए तो क्या मैं उसको हेल्प करूंगा? चलो ठीक है, शायद मैं हेल्प करूंगा, लेकिन क्या उसकी, अगर वो ब्लैक है तो क्या मैं हेल्प करूंगा? अगर वो ब्लैक है और मैं भी ब्लैक हूं तो मैं हेल्प करूंगा। अगर वो ब्लैक है और मैं व्हाइट हूं तो क्या मैं हेल्प करूंगा? तो दीज वर द डिफरेंट सिचुएशंस, राइट, दैट दे वांटेड टू सी वेदर इन सिचुएशंस में कौन इंसान कितना हेल्प करना चाहेगा. सो these are the points, yeah, these are the pointers that are going to help another person in deciding whether this person wants to help or not. Importantly, the field experiment. So again, इसने क्या करा था? Previous studies were lab experiments. He conducted a field experiment. What is the difference between a lab and a field experiment? Lab experiment में हर चीज controlled होती है. Field experiment में not everything is controlled. लैब एक्सपेरिमेंट में आईवी मैनिपुलेट हो रहा होता है हमारे रिसर्चर के हाथों. इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट द आईवी इज नेचुरली अकरिंग. आगे चलते हैं. हमारा जो लैब एक्सपेरिमेंट होता है लो इन इकोलॉजिकल वैलिडिटी होता है. हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट हाई इन इकोलॉजिकल वैलिडिटी होता है. ऑलराइट, सो अगेन इन्होंने वो इंपॉर्टेंटली इन्होंने पिलियावन ने फील्ड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा. ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड द इम्पैक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ मॉडल. So what he did was he placed a model in the same area where the victim needed help. So for example, let's see, अगर मैं कहता हूं कि यहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, I am a person who does not know कि he is being observed या is being is a part of a research. Here is the victim who has a stick. He is going to fall. हो सकता है me as a person does not want to help and may not help. So this person has fallen. Someone needs to help this person, right? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पे एक मॉडल को भी प्लेस कर दिया. ये मॉडल क्यों प्लेस किया? So that they can identify कि जब इंसान वैसे ही हेल्प नहीं करता, लेकिन अगर एक मॉडल जो कि एक स्टूज है, एक प्लांटेड पर्सन है, जिसका काम है स्क्रिप्ट दी हुई है कि आपने इतने सेकंड्स बाद उसको जाके हेल्प कर लेना है विक्टिम को, अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा तो क्या मॉडल के इंटरवेंशन से या इंटरवीन करने से हमारे बाकी बाय स्टैंडर्ड्स आर गोइंग टू हेल्प और नॉट? दे आल्सो वांटेड टू फाइंड दैट आउट कि क्या किसी एक इंसान को हेल्प करना शुरू करनी चाहिए और फिर बाकी लोग अचानक से हेल्प करने लग जाते हैं, या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता. सो दिस इज आल्सो व्हाट दे वांटेड टू हेल्प टू सी. इसके अलावा इन्होंने और भी कोई चीज जो है वो देखना था. वो क्या थी? दे वांटेड टू सी the relationship between the size of group. एक bystander, कितने bystanders होंगे तो diffusion of responsibility होगी, pluralistic ignorance होगी, bystander apathy होगी, and the frequency of helping. क्योंकि according to the previous data, the more
the people in a group the less help was received. मतलब जितना ज्यादा इंसान हमारे पास बाय स्टैंडर्ड्स में मौजूद होगा, chances of getting help will decrease as much. जितने ज्यादा लोग उतनी कम हेल्प के चांसेस. Now let's talk about the method and procedure. So we've understood कि इन लोगों ने ये चीजें देखनी थी. The factors, situational factors that will help a person in deciding whether they want to help or not, and along with that they wanted to see the impact of model, presence of model. When a model helps, क्या उसके पीछे लोग आते हैं help करने के लिए, and along with that the relationship between the size of the group and the speed of helping. क्या size बड़ा होगा तो speed of helping कम हो जाएगी, क्या size छोटा होगा तो speed of helping बढ़ जाएगी, या उलट, या vice versa. Now let's talk about the method and procedure of this research. How did Piliavin conduct his research? क्या procedures उसने इस्तेमाल करे? Now remember, ये जितना भी हमारा procedures होता है and methods होते हैं, ये सारे हमारे वो methods and procedures होते हैं जो हम लोग already पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में in our research methods का chapter. All right, so you will not get anything that is out and not present in the research methodologies chapter. You will get everything and anything that is present in here only. तो आपके पास रिसर्च मेथोडोलॉजी के चैप्टर में जो जो टेक्निक्स, जो जो मेथड, जो जो प्रोसीजर्स मौजूद हैं, ये रिसर्चेस उन्हीं को इस्तेमाल करके की हुई होती हैं. What do we expect from you is, हमसे हमारा जो एग्जामिनर है वो क्या एक्सपेक्ट करता है? वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं और आप दोनों मिलकर ये समझें कि यहाँ पे कौन कौन से मेथड्स एंड प्रोसीजर्स इस्तेमाल हुए हैं. दैट मीन्स हमें वो आइडेंटिफाई करना आने चाहिए. लेट्स मूव इन. The method used was a type of field experiment using participant observation. Now let's understand what this means. Field experiment हमें पता है जहां पे हमारा रिसर्चर फील्ड में जाता है, जहां पे जिस चीज को वो स्टडी करना चाहता है वो ऑलरेडी हो रही है, and he wants to identify what he is there to find out about. Whereas using participant observation मतलब ये हुआ कि the researcher becomes part of the research, meaning the researcher takes part in the research that is being conducted. जो हमारा रिसर्चर है वो उस रिसर्च में एज अ ऑब्जर्वर, एज अ पार्टिसिपेंट वहां पे चला जाता है, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस रिसर्च. ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि ये भी कोई नॉर्मल पर्सन है जो कि यहाँ पे मौजूद है, जस्ट लाइक अस जो कि यहाँ पे मौजूद है. Whereas it is not told to the participants
कि हम आपको ये जो बंदा है वो आपको ऑब्जर्व करेगा, आपके डेटा कलेक्ट करेगा. ऑलराइट. सो अगेन आई होप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो क्लियर हो गई हो. देयर इज अ पर्सन जो कि बोल रहा है कि क्लियर नहीं हुई है. सो आई एम गोइंग टू गो अबाउट इट वन मोर टाइम. सो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है व्हेन आवर researcher becomes or acts as a participant and takes part in the research being conducted. ठीक है. The real goal here is to observe the participants and their moves. Let's say मैं आपकी क्लास के अंदर एज ए स्टूडेंट बन के आ जाता हूं और मैं कहता हूं कि मैं ये आइडेंटिफाई कर मैं आपका ओके लेट्स रिफ्रेज. आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं अपने भाई को आपके पास क्लास में बिठा देता हूं एज अ बच्चा बना के, लेकिन वो असल में बच्चा नहीं है, उसका काम मुझसे पढ़ना नहीं है, उसका मेन काम ये है टू आइडेंटिफाई व्हाट यू गाइस आर एक्चुअली सेइंग एंड डूइंग अबाउट टॉकिंग अबाउट मी एंड माय क्लास. आप लोग आपस में बात करते हो कि यार सर बहुत बुरा पढ़ाते हैं, बहुत बुरा पढ़ाते हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं, जो भी आप डिस्कस करते हो वो ऑब्जर्व करता है, उसका काम है लिखता है, ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशंस बनाता है, मुझ तक पहुंचा देता है. मैं उस ऑब्जर्वेशंस को रीड करता हूँ, इंटरप्रेट करता हूँ और अपने रिजल्ट्स निकाल लेता हूँ कि मेरी क्लास के बच्चे मेरी क्लास के बारे में या मेरी टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में क्या कहते हैं. ऑलराइट. So that is known as a participant observation, where the participants don't know that the researcher has taken part in this research, acting or posing as a participant, whereas the main goal of the researcher is to collect observations and find out and interpret the results. So yeah, I hope now this is clear. Let's move forward. The participants were approximately 4,450 men and women. ये इंपॉर्टेंट है, यूजुअली आपसे ये पूछ लेते हैं कि क्या काउंट था हमारे टोटल पार्टिसिपेंट्स का. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4,450 पार्टिसिपेंट्स थे इन टोटल. ठीक है, जिसमें men and women भी थे, traveling on a particular stretch of New York underground system between 11 a.m. and 3 p.m. That means there were multiple trials of this जो कि 11 o'clock से लेके AM ये 3 p.m. तक कंटिन्यूस कर रहे थे. दैट मीन्स ये लोग एक सबवे ट्रेन के अंदर बैठते हैं, वो सबवे ट्रेन एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच जाती है, फिर वो पॉइंट बी से वापस बैठते हैं और वो पॉइंट ए वापस पहुंच जाती है. एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग ऑन फ्रॉम 11 a.m. to 3 p.m. दैट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, और इन्होंने डेट्स भी हमको बता दी हैं कि ये
वीकडेज के अंदर होता था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल 15 जून टू जून 26 ऑफ 1968. दैट मींस ये अप्रैल, मई, जून, 3 months, ये अप्रोक्सीमेटली 3 months तक ये स्टडी चलती रही. दैट मींस कि ये 4,450 पार्टिसिपेंट्स एक टाइम पे नहीं थे. कलेक्टिवली बात हो रही है कि जितने भी ट्रायल्स इन्होंने किए, जितनी भी इन्होंने ये ट्रायल्स करे, फ्रॉम 11 AM से 3 PM, फ्रॉम द टाइम फ्रेम 15th of April to 26th of जून के बीच में जितने भी दिन आते हैं वीक डेज, उन सारे वीक डेज में 11 बजे से लेके 3 बजे के बीच तक ये लोग रोज इसको प्रैक्टिस करते थे, मल्टीपल ट्रायल्स करते थे. उन सब के कलेक्टिव पार्टिसिपेंट्स इनके पास हैं 4,450, विच इज अ वेरी गुड पार्टिसिपेंट सैंपल. क्योंकि इतना बड़े लोग, इतने ज्यादा लोगों के ऊपर इस पूरे फिनोमिना को टेस्ट करने के बाद दे कैन इजीली से कि इनके रिजल्ट्स बहुत ऑथेंटिक हैं, बहुत वैलिड हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर सेम रिजल्ट्स आए हैं. ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर. थोड़ा क्लीन कर देते हैं, जस्ट अ मिनट. ऑलराइट, सो हमारे पास आगे क्या है, द एवरेज रेशियल कॉम्पोजिशन. तो बिकॉज इफ यू रिमेंबर वी आइडेंटिफाइड कि हम लोगों के पास रेस इज ए वेरी बिग फैक्टर. ठीक है, विक्टिम का भी एंड पार्टिसिपेंट, या जिसको हम कह रहे हैं हेल्पर का भी. ठीक है, द पर्सन हु वांट्स हेल्प उसके लिए भी, एंड द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव हेल्प उसके लिए भी ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है फॉर बोथ. तो हमारे पास रेशियल कॉम्पोजिशन आ जाती है जहां पे देर आर 45% ब्लैक, 55% white people in that area where helping behavior will be assessed. The average number of people in a train that is 43. मतलब ये एक वक्त पर 43 लोगों को ये जगह, ये कैरेज, ये सबवे ट्रेन का जो बुगी है, ये 43 पीपल ऑन एन एवरेज ट्रैवल कर सकती थी. ठीक है, people in the critical area where the incident was staged was 8.5 people approximately. ये क्या है मैं आगे जाके बताता हूँ. इंसिडेंट एरिया क्या है, क्रिटिकल एरिया क्या है, एडजस्टेंट एरिया क्या है, ये सब मैं भी आपको बताता हूँ. अभी सिर्फ ये समझ लो कि क्या आपको ये समझ आ गया कि रेशियल कॉम्पोजिशन कैसी थी. इट वाज अप्रोक्सीमेटली 50-50 पीपल. राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. 2 पर्टिकुलर ट्रेन्स वर सिलेक्टेड. ठीक है, जिनके अंदर हम लोग लोगों को स्टडी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. The trains were chosen because they did not make any stops between the 59th Street and 125th Street. That means कि हमारे पास ये जिस ट्रेन के अंदर, जिस सबवे ट्रेन को हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, जिसके अंदर हम लोग जाकर, या पिलियावन ने सिलेक्ट किया था जिसके अंदर लोग जाकर जो है वो अपना रिसर्च कंडक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे. That was the train that did not stop between the commute. वो एक जगह से चलती थी, दूसरी जगह रुकती थी, एंड दैट इज इट. उसके बीच में, उससे पहले वो बिल्कुल भी नहीं रुकती थी. ऑलराइट, सो एंड दिस टोटल्ड टू अ 7.5 minute ट्रेन राइड. तो ये टोटल ट्रायल was of 7.5 minutes.
एक ट्रायल was 7.5 minutes. ये बात याद रखिएगा. Therefore, a single trial was a non-stop 7.5 minute journey. This is where I'm reading. ठीक है. ये है आपका टोटल एक सबवे का प्लान. यहां पे हमारा विक्टिम है और अगर यहीं पे हमारा मॉडल भी प्लेस्ड है तो ये है क्रिटिकल अर्ली स्टेज. क्रिटिकल अर्ली स्टेज का क्या मतलब है? क्रिटिकल एरिया है हमारा ये वाला. क्यों? बिकॉज द विक्टिम इज हियर. हमारा विक्टिम यहीं पर गिरेगा एंड विच इज वाई दिस एरिया बिकम्स द क्रिटिकल एरिया. तो क्रिटिकल एरिया क्या है? वो एरिया जहां पर हमारा विक्टिम गिरेगा. इस एरिया के जहां पे हमारा विक्टिम गिर रहा है इसके सामने वाला एरिया इज नोन एज द एडजेसेंट एरिया. ठीक है. ये वो एरिया होता है जो हमारे क्रिटिकल एरिया के बिल्कुल सामने है. नाउ एरियाज आपको डिफाइन हो गए. एक पूरे ट्रेन की बगी के अंदर द एरिया वेयर आवर participant, our victim is going to fall is known as the critical area. ठीक है. Whereas the place that is right in front of or adjacent to our critical area is known as the adjacent area. ठीक है. Let's move further. The 4 victims, one from each team, were males aged between 26 and 35, 3 white, 1 black, all identically dressed in Eisenhower jacket, old slacks and no tie. ठीक है. अगर आप इसको थोड़ा समझें तो हम लोगों ने यहाँ पे पिलियाविन ने क्या करा है. सो पिलियाविन has actually recruited 4 people as victims. ये 4 लोग जो इसने रिक्रूट करे हैं इन 4 लोगों के अंदर से ऑब्वियसली बात है क्योंकि हमारे विक्टिम का भी रेस बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे हेल्पर्स का भी रेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो विक्टिम्स में से इसने 3 व्हाइट एंड 1 ब्लैक. ठीक है. आगे चलते हैं. इन सब ने आइडेंटिकली ड्रेस किया हुआ है. ठीक है. दे आर ऑल आइडेंटिकली ड्रेस्ड. Four people, 3 white, 1 black, all dressed in the same way. ठीक है. इसके बाद क्या उन्होंने पहना हुआ था ये आपको पता होना चाहिए. वाई? बिकॉज इससे ही आपको जो है वो सवाल आ सकता है कि आइडेंटिफाई व्हाट वर द विक्टिम्स वेयरिंग. तो ये ओल्ड स्लैक्स, नो टाई एंड अ जैकेट आप लिखेंगे तो ये सही होगा. On 38 trials of victims, the victims smelled of alcohol. That means हमारे पास 38 trials of drunk situation हुए थे. ठीक है. एंड उस पूरे विक्टिम जो हमारा ड्रंक वाला विक्टिम था वो ड्रंक वाले विक्टिम के हाथ में क्या था? पेपर बैग.
या ब्राउन पेपर बैग भी लिख सकते हैं आप लोग. स्मेल्ड ऑफ अल्कोहल and carried a bottle of alcohol also. तो हमारा ड्रंक विक्टिम जो है, जो ड्रंक सिचुएशन में आएगा, जो टिप्सी होगा और वो झूम रहा होगा, दैट पर्सन इज गोइंग टू हैव ए पेपर बैग, a brown paper bag जिसके अंदर अल्कोहल होगी. He will be carrying alcohol in a brown paper bag, will be smelling of alcohol, and this happens 38 times in total. इसके बाद what about the situation of Cain? The Cain situation, Cain situation या जिसको हम ill situation भी कह सकते हैं, that happened 65 times. Took place 65 times, या trials took place. They were sober. Sober means कि उन्होंने they were from anyhow, कहीं से भी वो जो है वो drunk नहीं लग रहे थे. They were sober, carried a black cane, जिसको हम स्टिक भी कह सकते हैं. ये हमारा जो है वो केन कंडीशन थी, द इल कंडीशन. In all other aspects, victims behave identically in the two conditions, and each victim participated in drunk and cane trials. There were more cane than drunk trials because one of the teams of students didn't like playing the drunk victim. ठीक है, तो हम ये अगर देखें तो हमारे पास ये इनिशियली ही डेटा आना शुरू हो गया है दैट द ड्रंक विक्टिम जो कि एक्टिंग है, वो हमारे एक्टर्स को ही नहीं पसंद आ रही. सही है, ये बात आपको समझ आई. हमारे एक्टर्स को ही ड्रंक होना पसंद या एक्टिंग करना ही पसंद नहीं आ रही उसकी. तो क्या किसी को हेल्प करना पसंद आएगा? वेल, लेट्स फाइंड दैट आउट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. द मॉडल. अब मॉडल के बारे में भी हमें पता होना चाहिए. मॉडल का क्या काम था, कौन था, कैसा था. सो द मॉडल वर वाइट मेल्स aged between 24 and 29, were all casually dressed but not identically dressed. उन लोगों को हम लोगों ने कैजुअल क्लोथिंग में बोला था कि आप आइएगा, पार्ट लीजिएगा, ठीक है. लेकिन हमने उन सबको ये नहीं कहा था कि आपने एक जैसे कपड़े पहन के आना, बिकॉज दैट वुड हैव गिवन देम ऑफ. सबको पता लग जाता है कि ये बहुत सारे एक जैसे कपड़ों में लोग खड़े हुए, दैट मींस यहाँ पे कोई ना कोई देयर इज समथिंग हैपनिंग ओवर देयर. There were 4 different model conditions used across both the drunk and the cane victim condition. So आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्रिटिकल एरिया और एडजस्टमेंट एरिया समझाया था. यहाँ पे द क्रिटिकल एरिया एंड द एडजस्टमेंट एरिया, राइट. तो क्रिटिकल एंड एडजस्टमेंट के अंदर क्या फर्क है, क्या हो रहा है इनसे, ये हम यहाँ पे देखेंगे. द क्रिटिकल एरिया अर्ली, ये हमारी कंडीशंस हैं. क्या हैं? कंडीशंस हैं. कंडीशंस फॉर द मॉडल टू हेल्प. इससे हमें क्या मालूम होगा, अगर हम पीछे जाएं तो हमें ये पता चलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्पिंग, स्पीड ऑफ हेल्पिंग, ये हमें पता चलेगा
इससे क्या हमारा मॉडल जब क्रिटिकल अर्ली एरिया के अंदर खड़ा है, इसका मतलब क्या है, दैट द मॉडल, मॉडल का काम क्या है कि अगर कोई भी हेल्प नहीं कर रहा तो उसने आना है और उसने विक्टिम को उठा लेना है। लेकिन कब, ये डिसाइड करता है कि वो किस सिचुएशन में डाली जा रही है या किस सिचुएशन में उसको हेल्प करने का कहा गया है। अगर उसको बताया हुआ है कि ये क्रिटिकल अर्ली एरिया है, देन दैट मीन्स कि द model has to help the victim exactly after 70 seconds of the collapse। मतलब जब हमारा विक्टिम, ट्रेन चलेगी उसके कुछ टाइम बाद हमारा विक्टिम घड़ी देख के, टाइम देख कर is going to collapse। Once our victim collapses, then the model will start looking at the watch, because the model has to, if the model is in the critical early area, then the model has to help after exactly 70 seconds। ठीक है, नाउ विच मीन्स कि हमारा मॉडल कहीं यहां खड़ा होगा, बिकॉज दिस इज द क्रिटिकल एरिया। एंड क्रिटिकल अर्ली का मतलब क्या है कि 70 सेकेंड्स में उसने हेल्प करनी है, और वो 70 सेकेंड्स में कैसे हेल्प करेगी या करेगा, जब वो क्रिटिकल एरिया में खड़ा हुआ है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास और एक सिचुएशन आती है, इसके बाद ये होती है क्रिटिकल एरिया लेट। यहां पे उसने आफ्टर 150 सेकेंड्स हेल्प करना है, लेकिन द पर्सन, द मॉडल इज स्टिल स्टैंडिंग ओवर हियर, क्योंकि क्रिटिकल अर्ली है, मीनिंग क्रिटिकल एरिया के अंदर ही वो खड़ी होंगे, लेकिन हेल्प जो आएगी वो होगी आफ्टर, सॉरी, वो होगी आफ्टर 150 सेकेंड्स इन टोटल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं एडजस्टेंट एरिया। वी ऑल नो व्हाट इज द एडजस्टेंट एरिया, दिस इज द एडजस्टेंट एरिया। दैट मींस हमारा मॉडल कहीं यहां पे खड़ा होगा। एंड एडजस्टेंट के साथ भी दो कंडीशंस हैं, एडजस्टेंट अर्ली विच मींस कि हमारा विक्टिम के गिरने के 70 सेकेंड्स के बाद एडजस्टेंट एरिया से हमारा मॉडल इज गोइंग टू रन एंड हेल्प द विक्टिम। देन कम्स द सेकेंड एडजस्टेंट लेट, जिसके अंदर हमारा मॉडल अगेन यहीं पे खड़ा हुआ होगा, लेकिन विल कम एंड हेल्प आफ्टर 150 सेकेंड्स। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने मॉडल के जल्दी हेल्प करने से हेल्प किया या लेट हेल्प करने से लेट हेल्प करने आए। इससे पता चलता कि समवन हैज टू स्पीड अप, और हमें स्पीड का अंदाजा हो जाएगा कि कितनी देर में हमको हेल्प मिली। और एडजस्टेंट एंड क्रिटिकल एरिया में जहां पे हमारा मॉडल खड़ा हुआ होगा, हमें उससे ये पता चल जाएगा कि हेल्प ज्यादातर हमें कहां से आई, दूर वाले लोगों ने आके हेल्प करना पसंद किया या करीब वालों ने ही हेल्प कर दी। एंड इसी से हमें ये पता चलेगा कि क्या जब करीब वालों ने हेल्प कर दी तो दूर वालों ने हेल्प नहीं करी, या दूर वाले भी हेल्प करने आ गए, देन दैट मींस कि डिफ्यूजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है ही नहीं। एंड अलोंग विद दैट, जब डिफ्यूजन रिस्पांसिबिलिटी को देखें तो बाय स्टैंडर्ड्स कितने हैं, ये सारे बाय स्टैंडर्ड्स ही हैं जो कि एक इवेंट होता हुआ अपने सामने देख रहे हैं, जहां पे किसी को नीड है टू बी हेल्प्ड, उनको हेल्प कोई कर रहा है या सिर्फ लोग खड़े रह के देख रहे हैं, डूइंग नथिंग टू चेंज द सिचुएशन और टू अफेक्ट द सिचुएशन। सो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी seen through this. When the model intervened, he helped the victim to sit to a sitting position. तो हमारा मॉडल को कहा गया था कि if अगर ऐसा होता है कि आपको हेल्प करना पड़ जाए, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, तो what you have to do is you have to just pick the person up to a sitting situation या sitting posture, उसको बिठा दीजिएगा ट्रेन के फ्लोर पे ही, और जैसे ही ट्रेन रुकेगी आप लोग उठ के दोनों निकल जाइएगा। A number of observations were recorded. They observed, noted that total number of passengers who came to the victim's assistance, मतलब जो लोग हेल्प करने आए,
प्लस देयर रेस, देयर सेक्स एंड लोकेशन, मतलब वो कहां से आ रहे थे. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. कितने ज्यादा थे, कितने लोगों ने हेल्प किया. व्हाट वर देयर रेस, ब्लैक और व्हाइट, मेल और फीमेल. एंड लोकेशन का मतलब क्या वो एडजेसेंट एरिया से आ रहे थे ट्रेन के, या वो क्रिटिकल एरिया से ही आ रहे थे. ऑलराइट. The observers also noted the race, sex, and location of every passenger seated or standing in the critical and adjacent area. Why? Because this way they could identify from where was most help received. ठीक है. The observers also recorded comments made by the nearby passengers and also tried to elicit comments from the passengers sitting next to them. तो ऑब्जर्वर्स का काम ये था, ये सारा ऑब्जर्वर्स का ही काम है. ठीक है. ऑब्जर्वर्स क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, वो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे कि सबसे पहले जो हेल्प करने आए उनकी रेस क्या है, उनका सेक्स क्या है और उनकी लोकेशन क्या है, क्या वो एडजस्टेंट एरिया से आए या वो क्रिटिकल एरिया से उठ के हेल्प करें. फिर जितने भी लोग एडजेसेंट एंड क्रिटिकल एरिया में बैठे थे उन पैसेंजर्स का जो है वो, और जो खड़े हुए थे उन सारे पैसेंजर्स का जो है वो रेस, सेक्स एंड लोकेशन, कहाँ पे वो खड़े हैं, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करना था. फिर उसके अलावा दे द सेकंड ऑब्जर्वर्स आल्सो नोटेड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर हेल्प टू अराइव. मतलब जब हमारा ऑब्जर्वर, सॉरी, जो हमारा विक्टिम है, जब वो गिर गया, व्हेन दैट विक्टिम फेल, तो उस विक्टिम को हेल्प करने में कितनी देर लगी, कितनी देर लगी फॉर द फर्स्ट पर्सन टू कम एंड हेल्प दिस पर्सन. सही है. उसके अलावा दी ऑब्जर्वर्स आल्सो रिकॉर्डेड कमेंट्स कि कितने लोगों ने क्या कमेंट्स किया. फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कह रहे यार मैं तो हेल्प नहीं कर सकता, मेरे कमर का इशू है. सो दिस वाज आल्सो द ऑब्जर्वर्स जॉब टू आइडेंटिफाई, टू रिकॉर्ड. रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स के अंदर हमें क्या पता चलता है, दैट हेल्पिंग बिहेवियर वाज वेरी हाई. ओ गॉड, हमारी प्रीवियस स्टडीज ने तो कहा था कि हेल्पिंग बिहेवियर नहीं था, डिफ्यूजन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बायस्टैंडर एपिटी थी, पीपल डिड नॉट हेल्प एज द बायस्टैंडर ग्रुप इंक्रीज, मतलब जितने ज्यादा लोग हुए उतनी हेल्पिंग बिहेवियर कम हो गई. सो दिस was a total opposite of what we had already studied, और जो हम लोगों के पास डेटा था उससे बिल्कुल ही उलट रिजल्ट हमारे पास आ गया. और क्या पता चला? सो नंबर वन हमारे पास ये पता चला दैट हेल्पिंग बिहेवियर वाज वेरी हाई. नंबर टू, much and much higher than the earlier laboratory experiments. Of course क्योंकि laboratory experiments के problems थे वो हम already problems identify कर चुके हैं कि क्या थे. Therefore it was not possible to investigate the effect of models helping, because on a majority of the trials victims were helped before the model could even interact or intervene. मतलब हमारे मॉडल का जो हमने आइडेंटिफाई किया था कि जब मॉडल हेल्प करेगा तो मॉडल हेल्प करने की वजह से कितने लोग हेल्प करेंगे, ये आइडेंटिफाई करने का तो हमें मौका ही नहीं मिला, बिकॉज इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस मॉडल की तो नीड ही नहीं थी. पीपल वर हेल्पिंग ऑन देयर ओन before even the model could interact, or before even the model could actually make a move. The cane victim received spontaneous help. मतलब हमारे पास इस सिचुएशन में स्पॉन्टेनियस हेल्प आई, फौरन से लोगों ने हेल्प किया.
बिकॉज एनी हाउ राइट, अगर आप सोचे कि आप कहीं जा रहे हैं रोड के ऊपर एंड यूर अ चाइल्ड, मतलब आपकी क्या एज है, आप छोटे से बच्चे हैं राइट, और एक 60 ईयर्स के, 70 ईयर्स के, 80 ईयर्स के कोई अंकल जा रहे हैं, या इवन 30 ईयर्स का कोई अंकल जा रहा है, एंड वो चलते हुए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो लकड़ी से चल रहे हैं, दैट मीन्स यू नो ही इज नॉट वेल, एंड सडनली वो आपके करीब आके या दूर से आप देखते हैं वो गिर रहे हैं, गिर गए, won't you run towards helping this person because you know that this person is not well, you know you should help this person. एक नॉर्मल रिएक्शन है. सो हमारे पास भी यही आया, स्पॉन्टेनियस हेल्प मिली कहां पे, जहां पे हमारे पास इल सिचुएशन थी. On 60% of the 81 trials where spontaneous help was given, more than one person offered help. मतलब हमारे पास spontaneous help भी था, more than one person also helped. Meaning diffusion of responsibility and bystander effect, and उसके साथ साथ हमारा diffusion responsibility, bystander effect and pluralistic ignorance. क्या ये all of them stand negative? Yes. आगे चलते हैं. One person had started to help. There were no difference for different victim condition. That is, black हो या white हो, दोनों के अंदर helping behavior में कोई difference नहीं था. चाहे black बंदा गिरता था जो केन situation में था, या white बंदा गिरता था जो कि केन situation में था, ill situation में था, दोनों जब गिरते थे तो spontaneous help मिलती थी. More than one people would come and help. On the number of extra helpers that appeared, the race of the victim made no significant difference to helping behavior, but there was a slight tendency for same race people helping the drunk condition. इस चीज को मैं ऐसे बोलता हूँ, आप लंदन में हैं लेट्स से, और आप लंदन में कोई सबवे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके सामने पाकिस्तानी है जिन्होंने जो who is drunk and is you know saying उल्टी सीधी चीजें, और एंड पीपल नो कि ये पाकिस्तानी है क्योंकि उसने एक पाकिस्तानी फ्लैग लगाया हुआ है, राइट, एंड ऑफ कोर्स वो ना भी लगाया होता, हमारी कलर, स्किन कलर से हमें पता चल जाता है कि ये पाकिस्तानी है, देसी है. अब वो जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, वोंट यू फील ashamed, and you would want this, you would want to you know hold this person and put this person and you know make this person calm down so that people don't see you as him as they are looking at him. तो जैसे लोग उसको देख रहे हैं वो यही देखेंगे ना कि यार पाकिस्तानी होते ही ऐसे हैं. You would not want that to happen, and which is why you might help. तो इसी वजह से हमने देखा कि ड्रंक सिचुएशन के अंदर ओनली सेम रेस के लोगों ने हेल्प किया, एंड ऑल्सो हमारे केन कंडीशन में कोई रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं था. ब्लैक लोगों ने भी व्हाइट लोगों की हेल्प करी, व्हाइट लोगों ने भी ब्लैक लोगों की हेल्प करी. विक्टिम का रेस प्लेड नो impact on people's decision to help or not. Let's move forward. It was found that 90% of the helpers were male. मतलब हम लोगों ने ये देखा that males help more than females. Although there were more men present in general, तो ये इस वजह से भी हो सकता है. It was also found that 64% of the helpers were white, and that also could be because white were more present in the train in general. 55% white थे, 45% black लोग थे मौजूद ट्रेन के अंदर. This was what would be expected based on the racial description जो कि कैरेज में थी, वही चीज कह रहे हैं. Diffusion of responsibility was not evident. That means हम already यहाँ पे cover कर चुके हैं. Diffusion of responsibility जो है वो present नहीं थी. The diffusion of responsibility hypothesis predicts that helping behavior would decrease as the number of people or bystanders increase. ऐसा नहीं हुआ. ट्रेन में इतने सारे लोग मौजूद थे, उसके बावजूद multiple people came in to help. So again, hence diffusion responsibility and bystander effect did not play its role.
In fact, the field experiment found that the quickest help came from the largest group. Previous study कह रही थी, as the group, the people in a group increase, help is going to decrease. लेकिन हमने क्या देखा, that as people increased, most spontaneous help came from them. ठीक है? Nobody left the carriage during the incident. कोई भी उस कैरेज से भागा नहीं. मेनली ये भी रीजन था क्योंकि वो उस ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं था, तो कहाँ भागता, चलती हुई ट्रेन से तो नहीं गिर सकते थे. सो हेंस दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन. बट अगेन हो सकता था वो क्रिटिकल एरिया से निकल के एडजस्टमेंट एरिया में चले जाते, अगर उनको हेल्प नहीं करना था तो वो एरिया जहां पे विक्टिम गिरा है वहां से दूर हो जाते, लेकिन नोबडी डिड दैट. On 21 of the 103 total trials, 34 people left the critical area. Only 34 people left out of so many people. मतलब अगर हम 4,450 लोगों का टोटल जो है वो देख रहे हैं, that these are the total participants in our research, only 34%, 34 people left the critical area because they did not want to help. But it was okay. ये बहुत ही छोटा नंबर है, इनसिग्निफिकेंट नंबर है. मोर कमेंट्स वर ऑब्टेन्ड ऑन ड्रंक देन केन ट्रायल्स. ऑफ कोर्स के भाई अगर नहीं पिया जाता तो क्यों पी रहा है, व्हाट इज हिज इशू, व्हाई डिड ही ड्रिंक सो मच, व्हाई इज ही ड्रंक, व्हाई इज ही ऑन द ट्रेन, ही शुड बी किक्ड आउट, वगैरह वगैरह. इस तरह के हम लोगों को कमेंट्स जो कि हम लोगों के ऑब्जर्वर्स जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे, we saw these more of these kinds of comments in drunk situation rather than in the cane situation. And it was also seen that help was obtained when no one helped until 70 seconds. This could be due to the discomfort passengers felt. So हम लोगों ने देखा कि जो drunk condition है उसमें हमारे मॉडल को हेल्प करना पड़ा sometimes, but that could only be because of the discomfort. किसका discomfort? The discomfort कि हमारे जो लोग present हैं ट्रेन के अंदर, they don't feel comfortable, they don't feel safe. एक ड्रंक इंसान को हम हेल्प करने जाएं, वो मुझे कुछ निकाल के स्टैब कर दे, वो मुझे पुश कर दे, वो मुझ पर उल्टी कर दे, राइट? दीज आर द डिस्कम्फर्टिंग, मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही, राइट? ये सारे वो चीजें हैं, वो रीजन है जिसकी वजह से हमें ड्रंक सिचुएशन में हेल्प थोड़ी सी कम फील हुई. लेकिन इन कंपैरिजन टू केन कंडीशन, लेकिन इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस लैब रिसर्चेस, वी स्टिल सॉ कि उसके अंदर भी सबसे ज्यादा तेजी से हेल्प आ रही थी. ऑलराइट, let's clean this a bit. All right, let's move further. The following comments came from women passengers. It's for men to help. I wish I could help him. I'm not strong enough. जिस तरह मैंने कहा था कि ये कुछ कमेंट्स थे जो कि हम लोगों के ऑब्जर्वर्स ने जो है वो आइडेंटिफाई किए थे. लेट्स लुक एट द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई डू वी थिंक कि ऐसा रिजल्ट हमारे पास आया है. पिलियावन ने ये डिस्क्राइब किया कि for people to help in any situation, they think from the perspective of a cost and reward model. मैं अगर हेल्प करूंगा तो उसका कॉस्ट क्या है मुझे, राइट? एंड उस कॉस्ट का उसका रिवॉर्ड क्या है मुझे.
ठीक है, सॉरी, आई एम जस्ट गोइंग टू relocate this. Okay, so what is the cost of helping and what is the reward that I will get of helping anyone? अगर मैं किसी को हेल्प करता हूं, दैट इज, लेट्स से अगर हम इसको डिवाइड, इसको यूं करते हैं, ड्रंक, तो ड्रंक में कॉस्ट क्या है? डिस्कम्फर्ट, I could get hurt, this person could do something inappropriate with me. तो ये सारी चीजें क्या है, ये कॉस्ट में फॉल करती है. रिवॉर्ड क्या है? जब मैं इसको हेल्प कर दूंगा, इसको सही कर दूंगा, तो आप पर्सनल सेटिस्फैक्शन होगी, अदर पीपल आर गोइंग टू लुक एट मी एंड से व्हाट, ये देखो अच्छा बंदा है, इसने ये नहीं देखा कि बंदा किस सिचुएशन में इसने हेल्प कर दिया, वगैरह वगैरह. इफ द कॉस्ट आर हायर देन द रिवॉर्ड्स, I am not going to help. मैं हेल्प नहीं करूंगा. Whereas if the cost is less than the reward, then I am going to help in that situation. All right, ये बात समझ आई? तो अब इसको समझ, अगर ये कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट रिवॉर्ड मॉडल अगर आपको समझ आ गया है, तो लेट्स मूव डाइव डायरेक्टली इनटू इट. पिलियाविन ने क्या कहा? पिलियाविन ने कहा, they argued that firstly observation of any emergency situation creates an emotional arousal in bystander. मतलब अगर मैं यहाँ पे कहीं भी खड़ा हुआ हूँ और मैं कहीं भी खड़ा रह के कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन देखता हूँ, तो मैं देखकर ऑटोमेटिकली मुझे, मेरे अंदर एक अराउजल क्रिएट होगा, एक एम्पैथी क्रिएट होगी, एक एक अर्ज क्रिएट होगी टू हेल्प, राइट? दिस अराउजल मे बी परसीव्ड एज फियर. ठीक है, या तो ये अराउजल जो आपके अंदर आ रहा है, ये कोई फियर या डिस्गस्ट या सिंपैथी, डिपेंडिंग ऑन द एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन. ये सिचुएशन कैसी है? हो सकता है कि मैं अगर किसी, या बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने ड्रंक सिचुएशन में एक ड्रंक इंसान को हेल्प करा, शायद इसलिए किया हो क्योंकि उनको भी किसी ने हेल्प किया हो या उनको किसी ने हेल्प नहीं किया हो, and they may have felt very bad for the person in this situation right now, so they helped. So again, it depends on the situation and what kind of arousal is created, what kind of urge is created. अगर वो अर्ज सिंपैथेटिक है तो मैं सिंपैथाइज करूंगा और मैं कहूंगा कि बेचारा, इसको उठा लेता हूं. अगर वो अर्ज ऑफ डिस्गस्ट है तो मैं कहूंगा नहीं, मुझे नहीं हेल्प करनी, आई डोंट फील कंफर्टेबल विद दिस पर्सन, वगैरह वगैरह. आगे चलते हैं. दिस स्टेट्स दैट द अराउजल कैन बी इंक्रीज्ड or decreased by the number of factors that are empathy with the victim. अगर आपने देखा, जैसे मैंने बात करी थी कि एक पाकिस्तानी है और आप भी पाकिस्तानी, तो आप कहेंगे कि एक एम्पैथी बन गई ऑटोमेटिकली, यार इस बंदे, ये भी पाकिस्तानी है, मैं भी चलो यार हेल्प कर देता हूँ, बुरा लग रहा है, हमारा ही मुल्क का बंदा है, वगैरह वगैरह. सो एम्पैथी विद द विक्टिम, नंबर वन. एम्पैथी की वजह से हम लोग या तो हेल्प करते हैं या तो हेल्प नहीं करते. मैं देखता हूँ काला है, मैं व्हाइट हूँ, मैं कहता हूँ व्हाट, आई डोंट हेल्प ब्लैक पीपल, आई एम अ व्हाइट, आई एम अ सुप्रीमिस्ट, सो आई डोंट हेल्प द पर्सन. सो अगेन एम्पैथी कम हुई या ज्यादा हुई, ये डिपेंड करता है कि विक्टिम के साथ आपकी एम्पैथी कैसी है. What kind of empathy do you have with the victim? Being close to the emergency situation. The more closer you are, of the emergency situation, the more you will be inclined to help. Let's say अगर आप लोग यहाँ पे बैठे होते और मेरी यहाँ से कोई पेन गिर जाता, जो बच्चा मेरे करीब बैठा होता वो सबसे पहले फील करता कि इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प.
एंड हेंस जितना आप क्लोज बैठे होंगे सिचुएशन के, इमरजेंसी सिचुएशन के, उतना ज्यादा चांसेस है कि आप हेल्पिंग बिहेवियर शो करेंगे. थर्ड एक्सप्लेनेशन, द लेंथ ऑफ टाइम द इमरजेंसी कंटिन्यूज. जितना ज्यादा इमरजेंसी कंटिन्यू करेगी, चांसेस है कि उतना ही हेल्पिंग बिहेवियर कम हो जाए. This state of arousal can be replaced by the number of factors, including helping, seeking help from another source, leaving the scene, or deciding the person doesn't need or deserve their help. So जो हम लोगों ने सबसे पहली बात बोली कि हमारे पास एक स्टेट ऑफ अराउजल होता है, राइट? तो ये स्टेट ऑफ अराउजल की बात हम लोगों ने यहाँ पे देखी कि जब स्टेट ऑफ अराउजल होगा, व्हेन यू फील दैट यू नीड टू हेल्प द पर्सन, देन इन दैट सिचुएशन you are going to analyze what kind of help does this person need. Does this person even need my help or not? If yes, then you are going to help the person. But how are you going to help the person? That is entirely up to you and the kind of urge that is created in yourself. All right? Therefore, according to this model, we are motivated to help people not by altruism, that is acting selflessly, but by the interest of ourselves, but as a way of reducing unpleasant feeling of arousal. मुझे एक अगर unpleasant feeling हो रही है तो मैं उस unpleasant feeling को खत्म करने के लिए help करूंगा, not because I am a selfless person and I love to help. Piliavin Piliavin et al. Go on the urge that the chosen response depends on a cost-reward analysis by the individual. These include cost of helping, such as effort, embarrassment, and possible physical harm. अगर possible physical harm की possibility high है, embarrassment की possibility high है, और effort कम है, तो I'm not going to help. अगर effort कम है, embarrassment कम है, possible chances of जो है वो harm वो भी नहीं है, तो फिर I might help. ठीक है? Cost of helping such as cost of not helping such as अगर मैं ना हेल्प करूं, अगर मुझे लगता है अगर मैं हेल्प कर लूंगा, अगर मैं करूंगा हेल्प तो बाद में आई एम गोइंग टू ब्लेम माई सेल्फ कि मैंने क्यों किया, आई कुड हैव गॉटन आउट ऑफ दिस सिचुएशन, नाउ पीपल थिंक आई एम आल्सो लाइक दैट, वगैरह वगैरह, तो मैं हेल्प नहीं करूंगा. सो अगेन वी ऑल नो कि अगर कॉस्ट इज ग्रेटर, रिवॉर्ड is lower, we are less, then we are not going to help. If cost is high, reward is even high, if cost is low, reward is high, then I am going to help. ठीक है? Now यहाँ पे आपके पास वो सारे rewards हैं जो कि आपको ना हेल्प करके मिलेंगे. अगर मैं हेल्प नहीं करता तो जो है वो दूसरे लोग मुझे इस सिचुएशन में नहीं देखेंगे, वगैरह वगैरह. ये सारी वो चीजें यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई की हुई है. According to Piliavin et al., the results of their field experiments can be explained using the arousal cost reward model. सही है? So for example, the drunk is helped less often because the perceived cost is greater. Helping a drunk is likely to cause disgust, embarrassment, or harm. The cost of not helping is less because nobody will blame another person not helping a person who is drunk. सही है? And ये आपके पास examples हैं सारे जो कि आपको help करेंगे in your answer writing. इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोसीजर, अगर हम देखें कि हमारे पास स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस में क्या क्या चीजें हैं, तो वीकनेसेस सबसे पहले हमारे पास क्या है कि दिस स्टडी कैन बी क्रिटिसाइज्ड ऑन एथिकल ग्राउंड्स. Nobody in this research who took part, who was a participant, potential participant, knew that they were taking part in this research. Nobody was debriefed about the research. Nobody was told after the trial कि हमने आपको observe किया है, क्या हम इसको अपनी research findings के अंदर include कर सकते हैं.
Nobody were told about this. A problem with the field experiment is that the participants cannot give their consent. So none of them gave their consent because they do not know that they are taking part in a research or they are a participant in a research. Similarly, the participants are being deceived. झूठ बोला जा रहा है उनको because they are unaware कि जो हो रहा है ये emergency situation जो बनी है ये emergency situation is not exactly a true emergency situation. ठीक है? Following from this, it is possible that the participants may have felt a feeling of guilt कि मैंने उसको हेल्प नहीं किया या मैंने उसको हेल्प किया या एंजाइटी कि उसको क्या हुआ होगा, is that person fine now? So a person may and could have gotten psychological harm as well. A further problem with field experiment is that they are more difficult to control than a lab experiment. So for example, अगर कोई भी हम लोगों के पास प्रॉब्लम आ जाती है या अगर कोई ट्रैवलर एक दफा से ज्यादा दफा ट्रैवल कर रहा था उसी टाइम फ्रेम के अंदर, उसी डे के अंदर या उसी वर्किंग वीक के अंदर, या लेट्स से उसका रोज का 11 o'clock का वो ट्रेन वो पकड़ता था और वो रोज देख रहा है ये हो रहा है, then that person would have stopped helping. तो इस तरह के कितने सारे लोग हो सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि जितने सारे लोग जो कि रोज काम पे जा रहे हैं उनका एक स्पेसिफिक टाइम है जिस टाइम पे वो उस ट्रेन को पकड़ते हैं और उस पर कम्यूट करते हैं एंड दे सी व्हाट दिस इज हैपनिंग एवरी डे. तो अब जो रिजल्ट हमारे पास है उसमें बहुत सारे लोग नॉट हेल्पिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं, नॉट बिकॉज दे डोंट वांट टू हेल्प बट बिकॉज दे नो दैट दिस इज अ act that is going on. Let's talk about the strengths or the positives of this research. The main strength of the research of the study has to be its high level of ecological validity because ये field में हुई है already. ट्रेन हम लोगों ने सिमुलेशन नहीं बनाई, हम लोगों ने लोगों को बाहर से नहीं बुलाया, हमने एक कमरे को ट्रेन की बुगी या एक सबवे ट्रेन की जो है वो सबवे ट्रेन नहीं बनाया. दिस वाज नॉट अ डिपिक्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड, इट वाज एक्चुअली द ट्रू रियल वर्ल्ड जिसके अंदर जाकर हमारे रिसर्चर ने रिसर्च करी. सो अगेन इसकी इकोलॉजिकल वैलिडिटी बहुत हाई है. द स्टडी वाज डन इन अ ट्रू to life environment and consisted of an incident which could happen in a real life to anyone in any situation. ठीक है? However, some of the participants were very close to the victim and were in a situation where they could not escape. So that could also be the reason because of which हमारे participants ने जो है वो help करना पसंद किया. हो सकता है हमारे results उल्टे आते हैं अगर हम लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स को भागने की कोई जगह दे सकते हैं, राइट? दिस इज ऑफन अनलाइकली मोर देन इन अ सिचुएशन. कहीं भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इट इज नॉट, ऐसा नहीं होता कि आपको हेल्प पे अगर आप वहां एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपने हेल्प करना है, आपके पास भागने की कोई जगह नहीं है, पीपल आर लुकिंग एट यू, नॉट, नहीं, ऐसा नहीं होता. तो विच इज वाई ये एक हमारे पास थोड़ा सा ड्रॉबैक बन जाता है. The sample size is again a very large sample size and a very, 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 very perfect sample size. 4,450 याद रखिएगा ये. And we could assume that fairly representative sample भी हम लोगों को मिल गया है of New Yorkers. ठीक है? The researchers should therefore be able to generalize the findings. So the findings will be generalizable to other people and other situations as well. क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा एक जो है वो सैंपल साइज था. ठीक है जी, लेट्स मूव फर्दर. अ क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉस्ट रिवॉर्ड मॉडल है हमारे पास, अराउजल कॉस्ट रिवॉर्ड मॉडल. इट इज दैट इट टेक्स वेरी नेगेटिव व्यू ऑफ द पीपल. ऐसा नहीं होता. देयर आर सम पीपल हु आर एक्चुअली हेल्पिंग बिकॉज दे लाइक हेल्पिंग और दे डोंट हेल्प बिकॉज दे डोंट लाइक हेल्पिंग, नॉट बिकॉज दे इवैल्यूएट एंड एनालाइज कि कॉस्ट कितना है इसका, रिवॉर्ड क्या है हमें हेल्प करने का. ये सब नहीं होता. तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसका. Altruism refers to the behavior which is unselfish behavior motivated by a person's needs and goodwill. ठीक है?
Furthermore, Piliavin et al. And a number of other psychologists chose to investigate the inactivity of the bystanders, but not why women are voluntarily and sexually attacked. So again, in इस स्टडी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसने बायस्टैंडर इफेक्ट को चूज कर लिया rather than not why people are assaulted or why specifically women was assaulted. क्योंकि किटी जिनोविस के केसेस में शी वाज असॉल्टेड, उसको 32-40 दफा स्टैब करके मार दिया. The victim stayed there for 30 minutes stabbing and killing this lady, and what the psychologists have picked up is bystander effect. Why did people not help her? They did not choose the factor कि why does any person or any human being attack another woman. इसको किसी ने भी नहीं देखा. Alright, so इनकी सिलेक्शन के ऊपर एक क्रिटिक है. Finally, it is interesting not to note that 40 years on from the murder of Katie Genovese, there are still considerable debates in New York about the accuracy of the original reporting, and हमारे पास थोड़ा सा इसकी reporting वगैरह के अंदर भी flaw था. Perhaps there was not as many witnesses, and some people may say that they had called the police. तो हमारे पास यहाँ पे भी एक flaw है. All right. So that is it for today. ये हमारी एक study complete हो गई है. Inshallah, in the next class we will be looking at another research. Take care, bye then. Khuda Hafiz.